So let us start with the Fourier transform. Yes, sir. Now remember, in Fourier transform, there are only three formulae, and all the examples are based on that three formulae. The first one is Fourier transform, also called FT. The Fourier transform of fx. So minus infinity less than x less than infinity means x is any real number. It is from minus all the real numbers minus infinity to plus infinity. The Fourier transform of fx minus infinity less than x less than fx infinity is defined is defined as f lambda, capital F. Du, equation number 1. So this integral is the Fourier transform of fx. Now if the function f is a function of x, here we write f of u by changing the variable. E raised to minus I lambda u will be always there. It is known as kernel of the integral and variable is u. So du means u is the variable. Remember this one. And this e raised to minus I lambda u is always there in the integral, that is called kernel. Kernel of the integral. F of u, so from fx you can write f of u. And if we solve this integral, this entire integral depends on lambda, so it is called f lambda. So u is the variable. U is variable. Du is there, so u is variable. Lambda is called parameter, unknown quantity. And remember that every definite integral depends on the parameter. Lambda is the parameter, it is f lambda. So we denote this integral by f lambda. Small f is the function of x or function of u. And capital F is the Fourier transform. Understood this one? So this is the definition of the Fourier transform. Now, the inverse of the Fourier transform of f lambda. Fourier transform f lambda is given by write this small f outside, its argument will be x, write multiple 1 upon 2 pi, limits are same, take this f lambda inside the integral, that is f lambda. F lambda will be inside the integral and kernel as it is, but sign is positive. E raised to I x lambda t lambda, equation 2. So can you tell me the variable of this integral? Which is the variable? X. Integration. No. Integration is with respect to lambda.
See this lambda. So lambda is the variable, and which is unknown quantity then. As lambda is the variable, x will be unknown. X is parameter. That is the definition. And definite integral is always the function of the parameter, so it is f lambda. Sorry, it is fx. Remember that argument of e in transform, in Fourier transform is, so this is very important. See, this is called argument. This one. Argument of the kernel in Fourier transform is lambda u, and argument of kernel in inverse transform, inverse Fourier transform. What is the argument? This one. It is x lambda. So these two arguments are very important, lambda u and x lambda. So this is called Fourier transform of the given function fx. So we have to use this formula. Then second one is Fourier cosine transform. FCT. The Fourier cosine transform of fx interval is 0 less than x less than infinity is given by f c, c for cosine, notation symbol lambda. Limits are 0 to infinity, and for fx write f of u, and as it is a cosine transform, kernel is cosine, and argument of cosine is lambda u. See this argument of kernel is cosine into the transform in Fourier transform, in Fourier cosine transform, it is lambda u du. U is the variable and lambda is parameter. Then equation number 3, suppose the inverse of Fourier cosine transform of f lambda, fc lambda is given by, write this small f outside as usual, variable is x. So change the multiple here, it is 2 by pi. Instead of 1 upon 2 pi, 1 upon 2 pi is the multiple in the Fourier transform, and 2 by pi is the multiple in the inverse transform, cosine transform. 0 to infinity. Shift this fc lambda inside. Kernel function cosine as it is, but the argument of this kernel cosine is x lambda. It is x with respect to lambda. Equation number 4. So here u is the lambda is the variable, and x is parameter. So that is called Fourier cosine transform. And the third formula is Fourier sine transform.
एफ एस the Fourier sine transform of fx 0 less than x less than infinity is given by f s lambda, s for sine and c for cosine. Fc lambda is equal to integral 0 to infinity f of u. See, same formula. Just replace cosine by sine. Sine of lambda u du. Equation 5. And the inverse is given by the inverse of Fourier sine transform fs lambda is given by same result is given by fx is equal to 2 by pi multiple integral 0 to infinity f of u, sorry, fs lambda sin x lambda d lambda. Equation 6. So here lambda is the variable and x is the parameter. So you have to remember all these things while solving the problem. So these are the only three formulae in this article, Fourier transform. So better to write this or take the screenshot of this formula. Sir, what is the parameter and variable in Fourier sine transform? Variable means this one changing quantity. So this is the integration with respect to what? U. Du means integration U. with respect to u. So that quantity u is called variable. And the other unknown quantities present in the integral is known as parameter or known as parameter. Lambda. Lambda will be parameter. U is the variable, means these are the limits of u, minus infinity to infinity. Minus infinity to infinity are the limits of u. And when we solve this integral, we have to introduce upper limit minus lower limit. And if we perform that integral, then lambda will be as it is in the integral. No change in the value of lambda, or lambda remains same in the process. That's what is called f lambda, function of lambda. So Okay. every integral is the function of parameter. Always remember all the different integrals. All the different integrals involving parameter are the functions of parameter. So u is a variable, so answer will contain lambda. Now here, what is the variable? D lambda means lambda is the variable, isn't it? Lambda is a variable. Then what is parameter? X is a parameter. So this entire integral of solving will be function of x. It is fx, small f. So that is the definition of the Fourier transform. समझ गए? Yes, sir. अब ये आपको तीनों फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा. नंबर 1, 2 एंड 3. दे आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूले. और दो तीन टाइप की एग्जाम्पल है इसमें, तो करेंगे साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर आप वो समझा दोगे ना, मतलब कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि वहां पे ही थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, आप ये ध्यान में रखो, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए तीनों फॉर्म.
जैसे मैंने लिखा है मल्टीपल 2/पाई इनवर्स में लिया, इधर इनवर्स में मल्टीपल 2/पाई लिया, किधर मल्टीपल इनवर्स में 1/2 पाई लिया, किधर पैरामीटर है किधर वेरिएबल है, कौन सा फोरियर कोसाइन है कौन सा फोरियर साइन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन किया होता है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट मेंशन क्वेश्चन वो डिसाइड द टाइप, either it is a Fourier transform or Fourier cosine or Fourier sine transform। वैसे तो मैं बताऊंगा ना अभी एग्जांपल करते टाइम, क्वेश्चन में जो पूछा है ना वो हिसाब से आपको एग्जाम फॉर्मूला चूज करना है। समझ गए? इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के लिए दो तीन फॉर्मूले है वो आ जाएंगे, फॉर्मूले जब एग्जांपल करेंगे तब मैं आपको मेंशन करूंगा फॉर्मूला कौन सा यूज करना है क्या करना है। ओके सर। हाँ, तो मैं स्टार्ट करूँ अभी एग्जांपल। हाँ सर। Yes, sir. ये हो गया तुम्हारा, स्क्रीनशॉट ले लिया कि? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, ठीक है, फिर मैं अभी स्टार्ट। फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। देखो सीधा क्वेश्चन पूछा है, फाइंड। तो फोरियर कोसाइन बोलो तो दो नंबर का फॉर्मूला है। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर -7x कॉमा एक्स मोर देन 0, इंटरवल भी दिया और फंक्शन भी दिया। तो सीधा और प्लेन क्वेश्चन है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करना है। तो इसका मतलब पहला फॉर्मूला कौन सा है? फोरियर ट्रांसफॉर्म। सेकंड वन इज अ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड थर्ड वन इज अ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो सेकंड यूज करो, द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म of fx is given by fs c lambda। second formula 0 to infinity f of u into cos lambda u du, ये फॉर्मूला is equal to integral 0 to infinity, can you tell me the value of f of u? Fx is there, fx is given in the question, fx is e raised to -7x, then what is f of u? Just replace x by u, x is to be replaced by u, like this. From fx, write f of u changing x to u into cos lambda u as it is du, and you have to solve this integral now। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो अभी लिख दिया था मैं आपको, ध्यान में रखो। ऐसा फॉर्मूला है, इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus ax cos bx। अभी आपको लर्न करने पड़ेंगे फॉर्मूले। इज ए अपॉन, सीधा आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इंटीग्रल 0 to infinity, लिस्ट में दूसरा फॉर्मूला e raised to minus ax into sin bx dx is equal to b upon a square plus b square। तो ये सच एग्जांपल के लिए आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ये लिख के लेना फॉर्मूले दो।
अभी कंपेयर करो ये इसके साथ। सी, इसका वेरिएबल तो एक्स है और इसका वेरिएबल क्या है, यू। So multiple of u in exponential function, multiple of x in exponential function is called a, power is negative. Power must be negative. इधर भी power negative है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है. So what is equivalent of a? Multiple. क्या मल्टीपल है देखो u का, 7. 7 और what is b? lambda. b is lambda. Put the value. So this is equal to a 7 upon 7 square plus lambda square. So answer is 7 upon 49 plus lambda square. ये हो गया इसका आंसर, पूरा हो गया प्रॉब्लम. देख लीजिए अगर समझ गया तो आपको. सर ये फॉर्मूला फिक्स रहता है ऐसा? बोलिए. सर ये फॉर्मूला फिक्स रहेंगे क्या हमेशा? हाँ यस, इस फार्मूला तो फिक्स है, वो दोनों फार्मूले है ना वो. तो अभी इसमें फार्मूले आने आने वाले बहुत फार्मूले इंटीग्रल की, मैं बताऊंगा आपको वो टाइप की एग्जाम्पल कैसे करना. Yes. सर अगर ये डायरेक्टली इम्प्लाई किया तो मार्क्स कट नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, फार्मूला लिखो और यूजिंग द फार्मूला बोलो और आंसर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके सर. हाँ, अभी दूसरा एग्जाम्पल. सर हाँ बताइए. कुछ ना कुछ. हाँ, फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. पहला था फोरियर कोसाइन का, अभी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला. ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू e raised to minus x plus e raised to minus 5x. X is more than 0 means x is from 0 to infinity, or even x is 0 to infinity, then only we can find the Fourier sine or cosine. Now using the third formula, solution. ये भी ऐसा ही प्रॉब्लम है. The Fourier sine transform of fx is given by f s lambda is equal to integral 0 to infinity. पहले लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, f of u sin lambda u du is equal to integral 0 to infinity. Now f of u, ये आपके पास एफ एक्स है, बराबर है ना, दिख रहा है कि आपको ये एफ एक्स है और इधर एफ ऑफ यू चाहिए. सो एक्स इज टू बी रिप्लेस बाय यू सीधा डायरेक्टली, ई रेस टू माइनस यू प्लस ई रेस टू माइनस 5u. ये हो गया एफ ऑफ यू साइन लैम्बडा यू डी इज इक्वल टू. सो मल्टीप्लाई सेपरेटली, first multiply by this way, then multiply this and take the separate integral 0 to infinity. First one is e raised to minus u sin lambda u du plus 0 to infinity e raised to minus 5u. सर पर अपन ब्रैकेट का सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि बेस सेम है. लेकिन एडिशन है ना, मल्टीप्लीकेशन नहीं है. एडिशन हो तो सॉल्व नहीं होता वो, अगर ऐसा हो तो सॉल्व हो जाएगा. e raised to minus u into e raised to minus 5u. बेस सेम है, पावर की एडिशन करने का ऐसे. ओके. लेकिन ये एडिशन है ना, तो अलग अलग करना पड़ेगा, सिंपलीफाई नहीं होता है. समझ गया ना.
सर ये क्वेश्चन का भी एक्स चेंज कर देते हैं यू से। हाँ, क्या क्या जब रिप्लेस किया हम लोगों ने एफ एक्स का एक्स को इक्वल टू यू रखा, तो हाँ, हमेशा क्वेश्चन में एक्स की जगह यू लिखने का इंटीग्रेशन में। क्वेश्चन में भी जो सर ऐसे एक्स था यू लिख देते हैं। हाँ, क्वेश्चन में एक्स ही रहेगा। जब इंटीग्रेशन लिखोगे ना उसमें यू यू आएगा एक्स के जगह। तो फिर बाद एक्स में वापस रखेंगे कि बाद में वापिस बाद में एक्स को वापस रख देंगे फाइनल आंसर में कि नहीं। इनवर्स, नहीं नहीं, एक्स में लिखने की जरूरत ही नहीं ना इसको। ओके ठीक है। हाँ, अभी बताओ, ये से कंपेयर करो, ये फॉर्मूला कंपेयर विद दिस फॉर्मूला। ये इसका ए होगा 1, इधर यू का मल्टीपल 1 है, और बी है लैम्बडा। इसमें ए इज 5 और बी इज लैम्बडा। नाउ अप्लाई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लैम्बडा अपॉन 1 स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा अपॉन सेम फॉर्मूला 5 स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा अपॉन 25 प्लस लैम्बडा स्क्वायर। ये होगा इसका आंसर। हो गया पूरा प्रॉब्लम। देख लो, अभी समझ गए क्या? बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा इंटीग्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा। हेलो। हाँ, एक मिनट। समझ गया ना? यस सर। इज इट ओके? Okay then. Now the new question. Express the function fx. Function fx is equal to. It has two values: 1 mod x less than 1 and 0 mod x more than 1 as a Fourier integral representation. As a Fourier integral representation.
Hence, evaluate integral 0 to infinity sin lambda cos lambda x upon lambda d lambda. ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है. हाँ, देखो अभी so here I will explain some mathematical terms or the standard formulae which are useful in this function. The first thing is in the solution Fourier integral representation means Fourier transform and inverse Fourier transform. So we have to calculate both. First you find the Fourier transform and the result, from the result use the Fourier inverse transform. So whenever we use both formulae, transform as well as inverse, that is called Fourier integral representation. Fourier integral representation means represent the function as a Fourier transform. Representing the given function as a Fourier transform. Fourier represent the function as a Fourier integral. That is called Fourier integral representation. That means we use the transform as well as inverse transform. And second thing is, you must know the definition of mod x. Mod x less than or equal to 1. Meaning is minus 1 less than x less than 1. ये आपको याद रखना पड़ेगा. And mod x more than 1 implies minus infinity less than x less than minus 1 and 1 less than x less than infinity. इसका मतलब ये होता है. ध्यान में रखो अभी ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करना है तो ग्राफ से समझ आता. सर ऊपर भी इंफिनिटी नहीं ले सकते क्या, माइनस नहीं इंफिनिटी नहीं से? इसमें नहीं इन्फिनिटी. लेस देन में नहीं, लेस देन में इन्फिनिटी नहीं आता. ओके. समझ गया ना. मोर देन में आता है इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी टू 1. अभी देखो ये रियल लाइन हो गई. सेंटर पे लेने का 0, ये साइड पे माइनस 1 और वो साइड पे प्लस 1 और इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी. तो ये जो पार्ट है ये पूरा इसको कहते हैं मॉड एक्स लेस देन 1. और ये जो है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 और ये 1 टू इन्फिनिटी, ये दोनों को मिला के क्या होता है, ये दूसरा पार्ट होता है. 1 होता है. ये प्रॉब्लम की समझ गए. यस. Try to understand this one by graphically. And हमेशा याद रखने का interval always starts from, if it is all the real numbers, it is from minus infinity to plus infinity. Yes. Minus 1 to 1, mod x less than or equal to 1, including minus 1 and plus 1. And these two parts together represent mod x less more than 1. It is mod x. Now remember here in the given function, mod x more than 1, the value of the function is what? 0. So we have to consider only this part, mod x less than or equal to 1. So fx is, so basically fx is like this in this example. It is 1 for mod x less than or equal to 1 and 0 for mod x, or this interval will be replaced by
What is the value of mod x less than or equal to 1? -1 less than x less than 1. और ये तो जीरो, इसलिए इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लाइक दिस. No need to express in this form. So keep as it is, mod x more than 1, like this. ये नॉन जीरो फंक्शन है ना, नॉन जीरो वैल्यू, इसके लिए इंटरवल मॉडुलस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंटरवल. नाउ कैन यू टेल मी मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल -1 to 1? Another concept in this example, midpoint of -1 to 1 is 0. -1 plus 1 upon 2, that is equal to 0. Therefore, check the corresponding function or evenness or oddness. तो ये जो पार्ट है नॉन जीरो फंक्शन, ये फंक्शन इवन है कि ऑड आपको चेक करना पड़ेगा. When we check the function for evenness or oddness, when the midpoint is what? If the midpoint of the interval is 0, then only check the function for evenness or oddness. What is even function? If f of minus x is equal to fx, then fx is even. That means on changing x to minus x, if the function remains same, it is known as even function. If f of minus x is equal to minus fx, sign of the function changes on changing x to minus x, then fx is odd. And after that, if fx is even, use Fourier cosine transform. And if fx is odd, use Fourier sine transform. ये भी आपको याद रखना पड़ेगा ये सब. This is very important for this example. ये सब फॉर्मूले अगर आपने नोट किया तो अच्छा रहेगा थोड़ा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रखने का. थोड़ा समझ लो ये बराबर है क्या? अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो. Yes, sir. Now let us see our function. Our function is, take only non-zero function. Our function fx is, check it for evenness or oddness. Replace, this is the criteria for checking the inverse and even or odd function. Replace x by minus x by minus x. तो x के जगह माइनस x लिखो, ये फंक्शन f of minus x. No change in the right hand side because there is no x on the right hand side. This one. So f of minus x is equal to, no change in the function, function remains same. बराबर है ना? So it is fx. Therefore, f is even. And then use Fourier cosine transform. तो इसमें आपको फोरियर कोसाइन यूज करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम. ये सब लिख के लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
लिखा तो बहुत अच्छा रहेगा ये, क्योंकि ये आपको किधर नहीं मिलेगा पढ़ने को भी। सर वो राइट हैंड साइड की एफ ऑफ एक्स वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है क्वेश्चन के बेस पे? कौन सी ये वैल्यू ना, ये ये जो वन लिखा है आपने मतलब। देखा, इधर का वन लिया ना ये, अच्छा, नॉन जीरो है ना ये। दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, ये दूसरा कौन, दूसरी वैल्यू क्या है बताओ। जीरो है। वो लेने का नहीं जीरो, ये नॉन जीरो वैल्यू लेने का सिर्फ, और इसका इंटरवल लेने का। ओके तो सर। व्हाट इज एफ एक्स? वन, इंटरवल -1 लेस देन एक्स लेस देन वन। तो हर क्वेश्चन में मतलब जीरो की वैल्यू मतलब वो सॉल्व ही नहीं करनी है, ऐसा है क्या? नहीं, वो जीरो छोड़ देने का ना, आपको जीरो लेने का ही नहीं, हर प्रॉब्लम में वैसा करना पड़ेगा ये टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है सर। हाँ हाँ। हाँ। नाउ वी हैव टू यूज फोरियर व्हाट, कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ये एज अ फॉर्मूला, नोट दिस वन एज अ फॉर्मूला, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू वन। इधर कभी मॉड एक्स लेस देन टू आएगा, मॉड एक्स मोर देन टू आएगा, मॉड एक्स लेस देन थ्री आएगा। नहीं तो ऐसा भी आता है कभी कभी, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट ए एंड मॉड एक्स मोर देन ए, ये भी आ सकता है कभी कभी। तो इसका मतलब होता है -a लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। इसका मतलब होता है एक्स लेस देन -a एंड एक्स मोर देन ए। ऐसे होता है इसका मतलब। ये हमेशा याद रखने का, ये पार्ट विथ फिगर। और ये भी ध्यान रखो, मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, ये दोनों सेम लिमिट्स है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है, एंड दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल इंटरवल, इज आल्सो कॉल्ड सिमेट्रिकल इंटरवल। Interval, and if the interval is symmetrical, midpoint will be zero, and if the midpoint is zero, corresponding function is to be checked for even or odd function. अभी ये फंक्शन तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन, दैट्स व्हाई इट इज इवन फंक्शन। इफ द फंक्शन इज इवन, use the Fourier cosine transform. If the function is odd, use the Fourier sine transform. तो ये कंसेप्ट है इसका, ये प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? Yes. हाँ, अभी क्या करने का, फोरियर कोसाइन का लिख लो फॉर्मूला ना, द फोरियर कोसाइन of fx is given by f c lambda is equal to integral, a formula 0 to infinity f of u into cos lambda u और डी, बराबर है। ना, देखो इंटरवल क्या बताओ, इसमें इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी है ना, तो यहाँ दिखाओ 0 टू इन्फिनिटी, इधर 0 और इधर इन्फिनिटी। और ये पार्टीशन वैल्यू क्या है बताओ, एक्स की पार्टीशन वैल्यू कहाँ का पार्टीशन की है, देखो इधर एक्स इज इक्वल टू वन, ये -1 भी है, -1 तो लेने की जरूरत नहीं है इसमें, आपने ये पिक्चर में समझ गए। तो 0 इधर 1 लिखने का, देन स्प्लिट दिस इंटरवल इंटीग्रल एज 0 to 1 and 1 to infinity। वन टू इंफिनिटी, समझे क्या मैंने क्या लिखा है ये? सी दिस वन, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द इंटीग्रल? इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इधर फिगर निकालो 0 टू इंफिनिटी की, 0 टू इंफिनिटी, तो बीच में 1 लिखो, क्योंकि इधर पार्टीशन किधर क्या इंटरवल है। ये फिगर देखो ना, ये फिगर है अपने यहाँ।
आपको चाहिए 0 to 1, तो ये चाहिए आपको। इसके दो पार्ट करो, एक 0 to 1 और दूसरा कौन सा है, 1 to ∞। तो ये 0 to 1 और ये 1 to ∞। ना 1 to ∞ में फंक्शन जीरो है, ये 1 to ∞ का। तो इधर जीरो लिखो, 0 cos λ u du। और इधर एफ ऑफ यू कितना है, ये देखो, एफ एक्स इन 0 to 1, what is fx? Fx is equal to 1, so f of u is also 1, no x on the right hand side, so it is 1 cos lambda u du. It is cos lambda u and plus integration of 0 is equal to integration of cos is sin lambda u is the variable, divided by coefficient of the variable in the function, that is lambda. U is from 0 to 1. Integration of cos ax dx is sin ax upon a, ये फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ sin ax dx is minus cos ax डिवाइड बाय a। याद में अब इसमें वैल्यू पुट करो, u इज इक्वल टू 1, ये लैम्बडा एज इट इज लिख देने का, 1/λ, नीचे लैम्बडा, नीचे u नहीं है, साइन ऑफ लैम्बडा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ लैम्बडा इंटू 0, इट इज 1/λ इंटू साइन लैम्बडा। लैम्बडा इंटू 1 इज लैम्बडा and lambda into 0 is 0, and what is sin 0? 0. So finally we got fc lambda is equal to sin lambda upon lambda. Thus fc lambda is equal to sin lambda upon lambda। ये हो गया फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म। देखो सर समझ में एक क्वेश्चन है। हाँ सर ये आपने 0 × cos क्यों लिया, ऊपर एक जगह 1 लिया और एक जगह 0, जब ये देखो, लिमिट्स डिवाइड नहीं करी। 0 to 1 लिमिट जो है, 0 to 1 लिमिट दिख रहा है कि इधर पहले वाले हाँ का लिमिट, हाँ ये तो हाँ समझ में आया ना लिमिट आपको दोनों। हाँ हाँ सर। हाँ 0 to 1 में फंक्शन की वैल्यू क्या है बताओ मुझे। सर 1। 1 है ना, ये क्या है ऊपर लिखा है ना, इसके ऊपर ये आगे देखो, इधर देखो 0 to 1 में सर किधर पॉइंटर दिख नहीं रहा है। दिखा था मैं जस्ट। सर वो वाला पार्ट पूरा एक्सप्लेन करिए ना, हाँ हाँ वो देखो, लिमिट्स वाला। ये ना फंक्शन 0, ये ऊपर का, यस सर। ये एफ एक्स वैल्यू 1 है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इन विच इंटरवल, -1 to 1। -1 to 1 बराबर है। माइनस यस। वन टू वन में 1 है, इसका मतलब 0 to 1 में कितना होगा, 1 ही होगा ना। हाँ सर 1। 0 ये दोनों के मिडिल में आता है ना, बराबर ना। यस सर। -1 to 1 में 1 है, इसका मतलब 0 to 1 में 1 ही होगा ना अपना, इधर 0 to 1 है ना ये देखो, इधर 0 to 1 है, ये ओके सर। 0 to 1 में भी फंक्शन की वैल्यू 1 आती है। और जो दूसरा इंटरवल है, ये जुड़ा ना, दूसरा दूसरा कौन सा भी हो, 1 to ∞, इसमें क्या वैल्यू है फंक्शन की, 0। 0, इसलिए 0 हो गए। इधर ओके। 1 आया, इधर 0 आया। और कुछ पूछना है पूछो। समझ गया। समझ गया ना। हाँ तो ये होगा एफ सी लैम्बडा अपॉन लैम्बडा। अभी अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन है फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है, पहले ट्रांसफॉर्म लेने का, बाद में इनवर्स लिखने का। फोरियर
integral representation. मतलब एफ आई आर, इसका मीनिंग होता है पहले एफ आर, देन उसके बाद इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, दोनों करना पड़ता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म एज वेल एज इनवर्स ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। दोनों सॉल्व नहीं करना है, एक ही सॉल्व करना है, पहले वाला सॉल्व करने का, दूसरे वाला सिर्फ लिखने का। इसको कहते हैं फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। एक मिनट। Now, Fourier integral representation means FIR means first transform and then inverse Fourier transform. Now we got the transform. Now we'll try to find the inverse of the Fourier cosine transform. The inverse of Fourier cosine transform is given by fx is equal to integral, sorry, multiple is 2 by pi cosine transform inverse of the Fourier integral 0 to infinity fc lambda inside into cos x lambda is the argument of the kernel of the inverse d lambda. This is the formula, is equal to 2 by pi. Just put the value. What is the value of fc lambda? Sin lambda upon lambda into cos x lambda
d lambda, and that is it. So that is called fx in terms of integration, and therefore known as Fourier integral representation. No need to solve this inverse. We just write in the inverse transform, and that is answer finally. This is answer. But one more part is there in the question. One more part is another part of the question is to find the value of integral 0 to infinity sine lambda cos x lambda upon lambda d lambda. That is the another part of the question, and that is very simple. You just use this one. So from this integral, ये देखो, the value of the integral like 0 to infinity, ये 0 to infinity sine lambda cos x lambda upon lambda d lambda cos x lambda upon lambda d lambda is equal to, now shift this 2 by pi on this side. So 2 by pi is the multiple on this side and it will divide on this side. Means it is pi by 2 fx. So that is value of the integral. यहाँ तक आपको करना पड़ेगा. सर ऐसे अगर एफ सी लैम्डा की वैल्यू गलत आती है गलत तो स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे? कैसी मतलब गलत है जी वैल्यू? गलत किधर आ रही है? नहीं अगर आई हमारी पेपर में हाँ, तो ये नहीं स्टेप्स के अगर marks- आपने प्रोसीजर फॉलो किया ना, ये थोड़ा हाँ बहुत चेंजेस हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको मार्क 1-2 मार्क कम होंगे लेकिन बाकी मार्क मिल जाएंगे. समझ गया? यस सर. हाँ. और कुछ पूछना है? नो सर. नो. नेक्स्ट एग्जांपल. फाइंड द फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये भी वही प्रॉब्लम है. इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन आया तो आपको दोनों करना पड़ता है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म एज वेल एज इनवर्स ऑफ द कोसाइन ट्रांसफॉर्म. प्लेन प्रॉब्लम. fx is equal to x 0 less than or equal to x less than equal to 1 and 0 otherwise. Solution. The Fourier cosine transform, पहले ट्रांसफॉर्म उसके बाद इनवर्स लिखने का, and if you add the inverse that is called cosine integral representation. The Fourier cosine transform of fx is given by fx fc lambda formula integral 0 to infinity f of u into cos lambda u du. This is the problem. Now is equal to, now the function fx has how many values? 2 values. बराबर है. One of the value is x, another value is 0. So split this integral into integrals. Now what are the limits of the first integral? 0 to 1. And second will be otherwise, means 1 to
ये इधर रिपीट करने का 1 to what is upper limit here? Infinity. Split 0 to infinity. This is 0 to infinity. And the first interval is partitioned at 1. So 0 to 1, first interval, and 1 to infinity, second. 0 to 1 and 1 to infinity, like this. So first 0 to 1 and then 1 to infinity. In 0 to 1, what is the value of the function? In 0 to 1, the value of the function is x. x. But replace x by u. It is u cos lambda u du. And in case of second integral, what is the value of the function? 0. Is equal to integral. So this will be 0. 0 to 1 u cos lambda u du. तो ये इंटीग्रल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताता, मैं आप देख लो फॉर्मूला। इंटीग्रल पॉलिनोमियल फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेबल ट्रिगोनोमेट्रिक, ये फॉर्मूला। ऐसे ब्रैकेट करने का, पहले दो ब्रैकेट, फिर माइनस साइन, और दो ब्रैकेट, अल्टरनेट साइन पॉजिटिव, फिर दो ब्रैकेट नेगेटिव, ऐसा करते रहने का। इन द फर्स्ट टर्म ऑफ द in the first bracket of first term, write p for polynomial, and t for trigonometric function, like this. P dash, p double dash, derivatives of p, and t1, t2 are integrals of t. Now this p is to be repeated here. Then in the first bracket of second term, write derivative of p dash, then p double dash, and etc. Second bracket, write the, don't repeat t, repeat p but don't repeat t. Write t1, integration of t as t1, then t2, and then t3. It is to use this formula. Very simple formula. So this is called generalized rule of by parts, integration by parts, where t is the integrable trigonometric function. ये t जो है ना, t must be sin ax और cos ax, दोनों में से एक होना चाहिए t, तभी ये फॉर्मूला यूज करने का, ये फॉर्मूला। और u means, this p means polynomial function. You know polynomial x, x square, x cube, x plus 1, x minus 1, they are called polynomial function. So better to write this formula. Very useful formula, general rule of integration by parts. So this is the only formula to be used in such integrals or in the integrals of the Fourier transform.
हो गया फॉर्मूला, लिख दिया फॉर्मूला। नो, टेल मी हियर हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर degree of the polynomial is 1, then write only two terms. Degree 2, 3 terms. Now, this is a polynomial function, u, like x variable, trigonometric function. Now, write u here as it is. Repeat u. Then in the second term, first bracket of second term, write the derivative of u with respect to u, that is 1. Like this. Now, what is integration of cosine? Integration of cosine, here we have to write the integration. Integration of cosine is sine lambda u upon lambda. And here integration of integral. Integration of sine is minus cos lambda u upon ये पहले वाला लैम्बडा और एक आने वाला लैम्बडा, दैट बिकम्स लैम्बडा स्क्वायर। फिनिश। इसके आगे कुछ नहीं आएगा। u फ्रॉम 0 to u इज इक्वल टू 1। सिंपल है, लेकिन थोड़ा नहीं आने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। समझ गया? कोई प्रॉब्लम है क्या, पूछो। क्लियर? आवाज? चित्रांश? हाँ सर। यस सर। अली? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। हाँ। नो सर, नो सर। अभी करो सिंपलीफाई। दिस इज इक्वल टू, now in both the terms put u is equal to 1. 1, u is 1, sin lambda upon lambda, minus minus plus, u is 1, cos lambda upon lambda square, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस इन द सेम वन पुट u is equal to 0, lower limit, upper limit 1, these are the values of u. If we put lower limit u is equal to 0, this term will be 0, u is 0, minus minus plus, u is 0 means cos 0 upon lambda square. सर यू कहाँ पे गया? हाँ, वन कैसे हो गया? बताओ। सर ये यू कहाँ पे गया? जो वन ये कैसे आ? ये वैल्यू पुट किया ना, u इज इक्वल टू 0 ओके और ओके u इज इक्वल टू 1। ओके सर। पहले u इज इक्वल टू 1 पुट किया, बाद में u इज इक्वल टू 0 पुट किया। ओके समझे? सर। साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा फर्स्ट टर्म, प्लस cos lambda upon lambda square, and minus cos 0 is 1 upon lambda square। ये हो गया फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म।
इसके आगे सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। Now, after that, our question is to find the Fourier cosine integral given condition. Then write the inverse. The inverse of इनवर्स सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा लिखने का इनवर्स। इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म is fx is equal to 2 by pi is the multiple 0 to infinity f c lambda sin x lambda, sorry, cos x lambda d lambda is equal to 2 by pi 0 to infinity, put the value of f c lambda sin lambda upon lambda plus cos lambda upon lambda square minus sin lambda, sorry, 1 upon lambda square, close the bracket, multiplied by cos x d lambda. Final answer. To express the function in terms of integral, that is called Fourier integral representation. This is the answer. Write the next one. Solve the integral equation. Zero to infinity fx cos lambda x dx is equal to e raised to minus lambda, lambda more than 0. इसको सॉल्व करना है, ये भी बहुत सिंपल एग्जांपल है। नीचे वाले सभी एग्जांपल वैसे ही है, ए बी सी तीनों। हाँ, देखो कैसे सॉल्व करने से। राइट हैंड साइड का इंटरवल एक्स में है क्या लैम्बडा में? सीरीज इंटरवल यहां से स्टार्ट करने का, लैम्डा लैम्बडा में, बराबर है। देन द वैल्यू ऑफ द इंटरवल इज कॉल्ड एफ लैम्बडा। ये ऐसा लिखने का, राइट हैंड साइड इंटरवल इज इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, द वैल्यू ऑफ द इंटरवल इज एफ लैम्बडा। और इधर देखो इंटीग्रेशन में कौन सा फंक्शन है, कोसाइन और साइन फंक्शन दोनों में से एक रहता है, कौन सा है? कॉस। कोसाइन। सो दिस इज कॉल्ड एफ सी लैम्बडा। अगर यहाँ साइन हो तो साइन लिखने का यस, बराबर है, इक्वेशन हुआ। अगर आपको एफ सी लैम्बडा मालूम है तो इनवर्स सीधा निकालने का, वी नो एफ सी लैम्बडा। देन यूज inverse of Fourier cosine transform, that is fx is equal to 2 by pi integral 0 to infinity fc lambda into cos x lambda d lambda is equal to 2 by pi integral 0 to infinity
What is FC lambda? E raised to minus lambda into cos x lambda d lambda. और इसके लिए फिर एक फॉर्मूला यूज करो, 0 to infinity e raised to minus ax cos bx dx. ये लिखना पड़ेगा आपको हमेशा, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला. So what is equivalent of a and equivalent of b? Now a means the coefficient of variable in exponential function. In exponential function, coefficient of the variable is a. Now here variable is x, but here variable is lambda. So what is the coefficient of lambda in exponential function? It is 1. Minus is there in the formula as well as in the problem. So what is coefficient of lambda in the cosine function? Coefficient of lambda in cosine function is x. This is equal to 2 by pi a upon a square plus b square. So final answer 2 upon pi into 1 upon 1 plus x square. ये हो गया आंसर, ये हो गया इंटीग्रल सॉल्व हो गया. तो इसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन. बहुत आसान रहता है प्रॉब्लम में. इधर कभी कोसाइन आता है कभी साइन आता है. अगर साइन आए तो साइन ट्रांसफॉर्म यूज करने का, कोसाइन है तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करने का. हो गया, समझ गए क्या? यस सर. अभी दूसरा, solve the integral equation. Zero to infinity fx into cos lambda x dx is equal to 9 minus lambda square, then 2 and 0. It has three values. First in the interval 0 to lambda, 0 less than lambda less than 3. Second one 3 less than lambda less than 5. And last one is lambda more than 5. Very simple question. Now interval is in terms of lambda. आएगा ध्यान में ये. It is in terms of lambda. So this is called f lambda. Let f lambda is equal to three values: 9 minus lambda square, 2 and 0. 0 less than lambda less than 3, 3 less than lambda less than 5, and lambda more than 5. And what is the integrand? Integrand contains cos lambda x, so it is called Fourier cosine transform. अगर यहाँ साइन हो तो साइन ट्रांसफॉर्म लिखने का. नाउ द इनवर्स ऑफ, अभी आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दिया है, इनवर्स लिखने का. द इनवर्स ऑफ Fourier cosine transform is given by fx is equal to 2 by pi integral 0 to infinity fc lambda into cos x lambda d lambda. सर क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू 9 माइनस एक्स स्क्वायर है कि लैम्डा स्क्वायर? लैम्बडा स्क्वायर है, x स्क्वायर नहीं. ओके. दैट इज लैम्बडा स्क्वायर.
हाँ अभी देखो कितने इंटरवल अपने पास, तीन है ना, जीरो टू इंफिनिटी, ये जीरो और ये इंफिनिटी। इसको स्प्लिट करना है जीरो टू थ्री, देन थ्री टू फाइव, एंड देन मोर देन फाइव मीन्स दिस वन. सो देर आर थ्री इंटीग्रल्स, जीरो टू थ्री पहले वाला, दूसरा थ्री टू फाइव, and तीसरा फाइव टू infinity. So split this interval integral into three integrals, 0 to 3 plus 3 to 5 and plus 5 to infinity. Now in 0 to 3, what is the value of the function? Fc lambda 9 minus lambda square into cos x lambda d lambda. In the second one, 3 to 5, in 3 to 5, the value of fc lambda is 2 cos x lambda d lambda, and this is 0 cos x lambda d lambda. So finally this will be 0. So consider only these two integrals, that is 2 by pi integral 0 to 3 9 minus lambda square into cos x lambda d lambda plus integral 3 to 5 2 cos x lambda d lambda. Close the bracket. It is like this. देख लो आपको समझ गया कहीं प्रॉब्लम है तो पूछो. सर फर्दर सॉल्व नहीं करना है इसको? पहले सॉल्व करना है ना, पहला सॉल्व करना, दूसरा भी सॉल्व करना है. करेंगे सॉल्व. ठीक, 2 by pi bracket. Now this is a polynomial and this is trigonometric function. What is the, and lambda is the variable. Lambda is the variable, so power of lambda is 2. It is second degree polynomial. So use that integration by part formula. First term like this minus second term plus third term. तीन टर्म आ जाएंगे इसमें. Why? Can you tell me why there are three terms in this by part formula? Because what is the power of lambda? Maximum power of lambda 2. So number of terms will be 3. 1, 2, 3. One more than the degree of the polynomial. This is a second degree polynomial. Lambda is the variable. Lambda is the variable. So in the first bracket, first bracket, write 9 minus lambda square. In the second term, first bracket, write the derivative of 9 minus lambda square. Derivative of 9 is 0, and that of 2 lambda square is 2 lambda. Then in the first term, third term, first bracket, derivative of 0 minus 2 lambda is minus 2. Like this. And lambda varies from, these are the limits of lambda, 0 to 3. Now, this second bracket, don't repeat the cosine function, trigonometry function, write the integration of trigonometry. Integration of cos is sine x lambda divided by coefficient of variable lambda, that is x. Now here, integration of sine is minus cos divided by x into, again x will be x square minus sine as it is, this one. Integration of cos is sine x lambda divided by
x into x square into x is x cube plus 2 as it is. Integration of cos x lambda is single term sin x lambda upon x. X varies from 3 to 5. Sorry, lambda. X. Then close the bracket. That is the integral is equal to 2 by pi. Now, in the first integral, replace lambda by 3 in all the terms. Then what about the first term? 9 minus 3 square. 9 minus 3 square becomes what? 0. And 0 into any term will be 0. First one is 0. Then minus, minus and minus. Second term. Minus, minus and minus is negative. 2 upon x square into, put lambda is equal to 3. 3 into cos 3 lambda. So this one is complete. Then minus minus plus. Putting lambda x is equal to 3, it is sin 3x upon x cube, upper limit. In all the three terms, put lambda is equal to 3, that is upper limit. Minus, again in all the terms, put lambda is equal to 0. If lambda is equal to 0, this term will be 0. Why? Sin 0 is 0. So it is 0. So this is non-zero, but this will be 0. This is non-zero, but this is 0. Because lambda is 0, sin 0 is 0. Now here again there is one factor lambda, this lambda. And we are putting lambda is equal to 0. This will be again 0. Plus sin 0, lambda 0, sin 0 is 0. So it is again 0. So here all the three terms are 0 for lower limit. And the terms are non-zero for upper limit. Plus here we put 2 by x as it is. Then sin 5 lambda 5x minus lambda is equal to 3 sin 3x. So this is equal to 2 by pi. Now this term as it is 6 cos 3x upon x square plus sin 3x upon x cube then finally plus 2 by x sin 5x minus 2 by x sin 3x, and that is answer. So this is the way to integrate. Check the integration. सर आप वो वाला पार्ट रिपीट कर सकते हैं क्या? ये अपन जो सॉल्व कर रहे हैं अभी, नीचे ऊपर कौन सा? वाला। सर ये जो अपन ये 2 बाय अपन ये 0 - 2 पाई सब लिए ना, बीच में वैल्यूज अपन जो 2 by pi नॉट ये सर। जोड़ना इधर से। सर आप साइन जीरो, हाँ सर उधर से समझाइए ना एक बार। हाँ देखो इधर अपर लिमिट क्या है बताओ? 3। इधर देखो दिख रहा है ना, वो पिन दिख रहा है, सर्कल किया मैंने 3 को। हाँ सर। तो ये वैल्यू किसकी है? 3 लैम्बडा की वैल्यू है। तो इधर लैम्बडा 3 अगर पुट किया तो 9 माइनस 3 स्क्वायर कितना था? 3 स्क्वायर 9, 0। 9 माइनस 9 0। तो ये 0 हो गया अपर लिमिट के लिए।
ये पूरा जीरो हो गया, इसलिए जीरो लिख दिया इधर। हाँ। ये फैक्टर जीरो हो गया, ये पूरा टर्म जीरो हो गया। अभी सेकंड टर्म देखो, माइनस माइनस और माइनस, ये हो गया -2। ये 2 और एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, मल्टीपल कांस्टेंट 2 x स्क्वायर। देन पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 3, 3 सर वो इंटू 0 - 2 पाई कैसे आया? 0 - 2 पाई, टू जीरो लैम्डा, माइनस, 0 - 2 लैम्डा। ये इसका डेरिवेटिव है ना इसका। 9 का डेरिवेटिव जीरो आता है। अच्छा हाँ। 9 का डेरिवेटिव कितना आता है? जीरो। जीरो और जीरो। लैम्बडा स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है? लैम्बडा स्क्वायर का 2 लैम्डा। 2 लैम्बडा। अभी अगले टर्म में डेरिवेटिव ऑफ -2 लैम्बडा कितना होगा? -2। -2 हो गया। ठीक है, इधर लिखा -2। समझ गया ना? बाद में लैम्बडा की जगह 3 पुट कर दिया, ये 2 तो लिख दिया वो, 2 x स्क्वायर, इधर आया 2 x। लैम्बडा की जगह 3, ये 3 आ गया, कॉस 3x। लैम्बडा 3 है ना ये, लैम्बडा इज 3, सो 3x, कॉस 3x, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 2। इसका 2 रह गया क्या लिखने का? ये 2 नहीं लिखा, हाँ सर, होगा वही वही। इधर 2 लिखो। ये 2 रह गया, नहीं, 2 sin 3x अपॉन x क्यूब, इधर 2 है। हाँ बराबर है। तो ऐसे सॉल्व करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। हो गया बराबर। अच्छा, 2 मिनट। हाँ।
Okay. Yes, sir. Now solve the integral equation. Zero to infinity fx into sine lambda x dx is equal to 1 minus lambda 0 less than lambda less than 1 and 0 lambda more than 1. ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है. Solution. Let interval is in terms of lambda. So this is called f lambda. 1 minus lambda and 0. And as the integral contains sine lambda, sine function, it is sine. So this is fc lambda. And once fc lambda is known, use the inverse. Using inverse of Fourier sine transform. Fx is equal to 2 by pi integral 0 to infinity fs lambda into sine x lambda d lambda, or 2 by pi. Now split this integral in how many integrals? 2. 0 to 1. ये पहला 0 to 1 है, दूसरा more than 1. 0 to 1 plus सर हम लोग साइन ही की यूज कर रहे हैं. इधर कौन सा फंक्शन है? अच्छा, ओके, ठीक है. तो साइन लेने का. इधर कोसाइन है तो कोसाइन लेने का. ध्यान में रखो. अभी ये एक प्रॉब्लम आने वाला है आपको ऐसा. ये जो 3 एग्जांपल किया ना, अभी तीसरा चल रहा है अपना. ये टाइप का एक प्रॉब्लम श्योर आएगा और बहुत आसान रहेगा वो. नाउ 0 to 1, what is the value of the function? In 0 to 1, the value of the function fc lambda is how 1 much? minus lambda. 1 minus lambda. Right here, 1 minus lambda into sine x lambda d lambda, and plus in 1 to infinity means more than 1. The value is 0. तो इसको तो छोड़ देने का. It is 2 by pi. Now, this is the polynomial function, trigonometric function. Power of lambda, variable is lambda, power is 1. So there are two terms, 1 minus 2. Lambda from 0 to lambda is equal to 1. It is like this. Now, in the first bracket of the first term, keep the polynomial function as it is 1 minus lambda. Then differentiate 1 minus lambda with respect to lambda right here in the second term. Derivative of 1 is 0, that of lambda is 1. Then write the integral of trigonometric function. Integration of sine is minus cos x lambda upon coefficient of variable. What is the variable? Lambda is the variable, and coefficient of lambda is x. Then integration of integration minus integration of cos is sine x lambda upon x into again x, that becomes x. It is 2 by pi.
upper limit, put lambda is equal to 1. So what is 1 minus 1? The first term, 1 minus 1 will be 0. Zero. So first term will be 0. Then minus, minus, minus. It will be minus. Put lambda is equal to 1. Sin x upon put lambda is equal to put lambda is equal to into clear. Yes, sir. नेक्स्ट वन, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा दूसरा करेंगे, वो बाद में करो. फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx is equal to x and 0 mod x less than 9 mod x more than 9 is 0 है. So given function is like this. ये mod में दिया ना, mod x less than 9, इसका मीनिंग होता है -9 less than x less than 9 एंड 0 ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज दिया तो भी चलेगा. अदरवाइज बिकॉज द करस्पॉन्डिंग फंक्शन इज 0. तो ये फंक्शन दिया आपको. अब ये देखो -9 to 9 मिड पॉइंट ऑफ, वो नहीं कि आपने पहला एग्जाम्पल किया -9 to 9 is -9 plus 9 upon 2, that is equal to 0. Therefore check the corresponding function. Non-zero function for evenness or oddness. fx is equal to, what is the corresponding function? ये तो 0, इसको छोड़ दो. fx is equal to x -9 less than x less than 9. f of minus x, replace x by minus x is equal to minus is equal to -9 as it is. x means fx. साइन चेंज हो गया ना, therefore fx is odd. Therefore use Fourier sine transform. Odd function मतलब Fourier sine transform, and even function means Fourier cosine transform.
सर ये वाला वापस समझा दीजिए ना वापस, एफ ऑफ कौन एक्स सा? जो लिया आपने, यही वाला जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स। हाँ हाँ, देखो मिड पॉइंट कितना है, मिड पॉइंट 0। हम्म। अगर इंटरवल का मिड पॉइंट 0 आता है, यानी कि इसका, ये है ना इंटरवल, मिड पॉइंट ऑफ -9 to 9, -9 to 9 is 0. Therefore, check the function, check the corresponding function, non-zero function for evenness or oddness. Corresponding non-zero function ये x है ना, ये तो जीरो, इसका इसके लेने की भी जरूरत नहीं है, इसको लेने का सिर्फ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, बराबर है। रिप्लेस एक्स बाय व्हाट, ये रूल है, इवन फंक्शन ऑड चेक करने का रूल है ये। जिधर भी एक्स है जो इक्वेशन में, उसमें एक्स की जगह क्या लिखना है, -x। माइनस। समझ गए? सो एक्स रिप्लेस बाय -x, एक्स की जगह -x, इधर भी एक्स की जगह -x लिख दिया। सो एफ ऑफ -x इज इक्वल टू -x की माइनस साइन एज इट इज, तो क्या रहेगा बताओ, माइनस साइन ऐसे लिख दिया है तो एक्स रहेगा ना, एक्स मीन्स व्हाट, एफ एक्स। तो ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है ऑड फंक्शन। देयरफॉर यूज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। और बताओ। हाँ समझा सर। हाँ, अभी लिख दो फॉर्मूला, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना। सो एफ एस लैम्बडा इंटीग्रल 0 to ∞ एफ ऑफ यू इंटू साइन लैम्बडा यू डी। Now split 0 to ∞ as which is a partition number here, 9. So 0 to 9 and 9 to infinity. In 9 to infinity, the value of the function is 0. This one, 0 sine lambda u du. And now what is value of f of u in this 0 to 9? 0 is the midpoint of the interval 0 to 9. In 0 to 9, it is x. Fx is x, so f of u is u. U sin lambda u, बराबर है। ये तो 0 हो गए, तो इसको सॉल्व करो, बाय पार्ट से सॉल्व करने का। ये दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री। अप्लाई द फॉर्मूला, power of variable in this one, it is a first degree polynomial, so there will be two terms. So u repeat करो इधर, derivative of u is 1, then integration of sin is minus cos lambda u upon u is the variable, so u is variable divided by lambda, minus sin integration of cos is sin lambda u divided by lambda into lambda, lambda square, and u varies from 0 to 9. Now put u is equal to 9, ये माइनस है, ये माइनस, u is 9, 9 cos 9 lambda divided by lambda, माइनस माइनस प्लस, हाँ, sin 9 lambda अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। ये हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट के लिए ये तो 0 हो जाएगा, u is 0,
तो ये जीरो मीन्स ये जीरो हो जाएगा, टोटल जीरो। और ये भी जीरो होगा बिकॉज व्हाट इज साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज -9 cos 9 लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस साइन 9 लैम्बडा लैम्बडा। दिस इज आंसर। ठीक है, यस। तो अभी दो एग्जांपल रह गए वो। कल तो मैं गांव जा रहा एक दिन के लिए, अगर जल्दी आया तो फिर मैं आपको कॉल करूंगा, मैसेज करूंगा। हाँ? ठीक। नहीं तो सर परसों। बस तो फिर कब तक खत्म हो जाएगा अपना, फिर अपने रिवीजन भी करना है ना थोड़ा। हाँ, ये तो परसों हो जाएगा ना पूरा। और मंगलवार को ये करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद ये रिवीजन चालू करेंगे, आपको जो भी डिफरेंट है तो पूछते रहो, मैं करते रहूंगा तो फिर बाद एलडी भी है ना, हीट इक्वेशन वाला भी है। में। हाँ, वही ना, वो एक हीट इक्वेशन आने वाला है ना कोई एग्जाम में। हाँ सर, दो हीट क्वेश्चन आते इक्वेशन। थे एक या दो। हाँ, हाँ सर आते हो। ठीक है ना, उसके 4 एग्जाम्पल मैं करके देता ना हीट इक्वेशन के आप। तो फिर रिवीजन भी हो जाएगा सर अपना। हाँ, वो करेंगे, रिवीजन भी करेंगे ना उसके आगे। पेपर कितने तारीख को है? 19 तो शायद सर। 19 को है सर। 19 को है क्या? तो आज कितनी, 10 तारीख है ना। अगर मैं कल जल्दी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करूंगा। 8:30 बजे तक भी आऊँ तो 8 बजे तक भी आए ना तो 8:30 बजे क्लास करूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम सर नहीं है। लेट भी दे तो चलता सर, अगर आपको जमेगा। चलेगा ना? हाँ सर, 9-10 बजे भी यस सर। चलता। ठीक है, अगर मैं रात को जल्दी आया ना फिर करेंगे कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल ये पूरा ही कर लेंगे, फिर मंडे और ट्यूसडे तुम्हारा हीट इक्वेशन पूरा करेंगे, यानी कि 11th और 12th, 2 दिन। ओके सर। हाँ, फिर 12th के बाद रिवीजन करते रहेंगे एग्जाम तक। हाँ सर। 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 1 वीक रहेगा ना आगे उसके। जो भी यस। कुछ एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल ले लो अभी। मैं भी वो सर को बोला है, वो बोले सर वो एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं बोला है वो सर, वो टीचर बोल देंगे, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या करना है उसमें। वो डायरेक्टली एग्जाम्पल नहीं देंगे वो, लेकिन वो टाइप के एग्जाम्पल देने वाले। ओके सर। ठीक है, फिर क्लोज करिए मीटिंग। हाँ सर। यस सर।